हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। हम घर पे बैठ सकते हैं, नहीं ये फाइल हम कल कर देंगे। आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, और आदमी ने जीते हैं तीनों लोग, पर आदमी ही आदमी से हारा है। दयापूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदिश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। One South actor and director that you would want to work with? So many. See, I don't want to upset anyone. There are so many talented filmmakers we have. If you were in power and could fix what went wrong during that time, what would it be? Best thing that we can do with what happened was not brush it under the carpet and revisit it. It's very important to have inconvenient conversations. 3 is fun. 3 is all fun. I love that film. I love it too. it did a lot of good to me. Three years ago, the world came to a halt due to COVID-19 and the lockdown. But cut to 2023, we are all here, vaccines are here, there are a couple of cases in the country, but not as much as we would call it a pandemic. But most of all, we have a movie which is based on true events. Thank you so much for bringing this story, this relevant story to us. Thank you so much. Thank you. You know, first of all, I would like to ask you all, how closely do you, identify with the theme of migrants in Bheed? Very closely. I think all of us have seen them firsthand because a lot of people, especially in metro cities like Mumbai, Delhi, there's so many people who come to these cities in search of work. And for me, actually, it's a full circle. So yesterday only I was talking to Patra and we realized how in City Lights, I played a migrant worker who's come from Rajasthan to Mumbai in search of work. And this one we are showing about the lives of people who are going back to their respective places. So I think I've seen them pretty much very closely through my work and otherwise in life as well. And how was it when the script was narrated to you? What was your first reaction? And if you could share with us any personal story during the lockdown that you may have felt to the core and it touched your heart. No, of course, the whole world, globally, we were in a pandemic and everybody was going through a loss or suffering in some way or the other. So, sorry, the first part of a question, when sir told me about the idea and I read the script, it was just one of those pitch perfect script. And I immediately said yes, also because I really wanted to work with him. I've been a big fan of his work since a very long time and I love him immensely as a person as well. So that was always the case that we have to work together sooner or later. So that started with Bheed, and I'm very glad it started with a film like Bheed, which is so relevant and such an important film for us, releasing on 24th March, this Friday. And about the lockdown stories, like all of us, I was also trying to help as many people as I could. People, like we come from a slightly privileged background, so we could afford to be in our homes for 4 or 5 months easily. But there were people who needed help financially or emotionally. So I was trying to just be available for them in whatever way possible. आशुतोष जी, अगर आपका कोई पर्सनल ऐसा कोई स्टोरी लॉकडाउन के टाइम पर जो आपके दिल को छू गई थी और आपको लगा, कई बार आपको हेल्पलेस भी शायद फील हुआ उस टाइम पर, ऐसी कोई स्टोरी? बहुत सारी चीज़ें, और मतलब अगर ये देखा जाए तो ये पूरा का पूरा ये सब मतलब अकेला आशुतोष का ही नहीं, ये इस विश्व में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, हमारे देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस ट्रेजेडी ने बहुत अंदर तक झकझोर दिया है, छुआ है। अगर आप देखें तो इस देश में या विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके किसी जानने वाले का इस विभीषिका में, ट्रेजेडी के दौरान नुकसान ना हुआ हो। हम और आप अपने घरों के अंदर इस तरीके से कैद हो गए थे, और घर में ही नहीं, यहाँ तक कि ये स्थितियाँ हो गई थी कि अगर मान लीजिए कि अस्पतालों में अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो अगर घर में ही 2 लोग हैं तो अलग अलग कमरों में हम लोग केंद्रित हो जाते थे, और ये लगता था कि नहीं, पता नहीं, ये एक ऐसी बीमारी है जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, ये हवा से आई है और हवा से आई है, और हम जितनी भी उस हवा को रोक सकें, और हवा को तो हम और आप रोक नहीं सकते हैं, तो अगर उस तरीके से देखें तो
हम लोगों के ऊपर तो परमात्मा की कृपा है कि सबके पास सब कुछ था, खाने पीने के लिए तमाम चीज़ें थीं, लेकिन वो लोग जो रोज़ खोदते हैं और रोज़ खाते हैं, वो लोग जो पानी पीने के लिए जिनको रोज़ कुआं खोदना पड़ता है और तभी वो पानी निकल के आता है, तो इस स्थिति में उनकी तरफ भी हज़ारों करोड़ों लोग ऐसे प्रिविलेज्ड हाथ बढ़े उनकी मदद के लिए कि उन लोगों को भी वो मतलब इस दौर में अगर देखा जाए तो वो वैसी, क्योंकि पूरे देश में अगर आपने देखा होगा कि जब ये माइग्रेंट वर्कर्स और अचानक हम जहाँ थे वहीं हो गए, ये बताया मतलब ये लगा, क्योंकि किसी को हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम कोरोना को के करियर हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो हम बचना चाहते हैं और अगर हैं तब भी हम छिपना चाहते हैं। वो वाली जो स्थिति आई थी, तो पूरा का पूरा जो व्यक्ति जहाँ था वहीं पर जड़ हो गया। और जब इसमें सबसे पहले जब आपको आपत्ति आती है, ट्रेजेडी आती है, तो संसार में कोई भी व्यक्ति कितना ही बड़ा, कितना ही सफल क्यों ना हो, अपने खतरनाक समय में, विभीषिका में, ट्रेजेडी के दौरान उसको अपना घर याद आता है। सही बात उसको अपने लोग याद आते हैं और वो अपनी जड़ों की तरफ भागने की कोशिश करता है, जहाँ से वो निकला था जगत जीतने के लिए। वो वापस जड़ों की तरफ लौटना चाहता है। तो ये जो भीड़ है, कहीं ना कहीं ये हम सबके अनुभवों की वही दास्तान है कि हम अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे थे, हम अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते थे। मुझे लगता है कि भीड़ ने ही अपनी दास्तान कही है। Absolutely. ये कोई मतलब अनुभव सिन्हा इसके निमित्त हो सकते हैं, हम और राजकुमार इसके माध्यम हो सकते हैं अभिनेता के तौर पर, या भूमि या पंकज जी, ये सारे लोग जो एक्टर हैं, हम माध्यम हो सकते हैं। लेकिन इन सब के जो किरदार हैं, वो एक बड़ा अच्छा शेर है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार देखिए। तो कहीं ना कहीं ये सब के अपने अपने जो भी किरदार हैं, तो आप में आपको वो सब के अनुभव दिखाई देंगे, जो मुझे लगता है कि भीड़ में उस पूरी की पूरी, क्योंकि इसने मनुष्यता को हमारी मनुष्यता को झकझोर के हमारी सोई हुई मनुष्यता को भी जगाने का काम किया है, ह्यूमैनिटी को। अगर आप देखें तो कितने अनसंग वॉरियर्स एंड हीरोज जो अचानक एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़ते हुए, क्योंकि लगा कि जब तक हम बच सकते थे, लेकिन जब हम नहीं बच पा रहे हैं तो फिर एक दूसरे को बचाने का ही काम कर लें। तो हम हेतु भी हो गए बचाने के और हम सेतु भी हो गए बचाने के। तो मुझे यही हमारी फिल्म की जो कहानी है, तो मुझे लगता है वो आपकी दास्तान है, मेरी दास्तान है, इनकी दास्तान है, विश्व की दास्तान है, देश की दास्तान है। मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी, do you think, not as an artist but as an individual, do you think the people in power handle the migrant situation in the country very well during the lockdown? Of course it could have been better, but no one was prepared for it. Nobody in this world was prepared for such events. Nobody imagined that suddenly hundreds of thousands of people will start walking back home. It was unimaginable. And with the benefit of hindsight, you can say it should have been better. But then a lot of things should be better. But if you could go back in time and if you were in power and could fix what went wrong during that time, what would it be? See, it's very easy to imagine what we could have done, because it's a big decision, it's a big responsibility. We're a country of 1.4 billion people. And to be in that situation, which is so uncertain, which we were not absolutely prepared for, the whole world was not ready for it. It's not easy to take, of course, decisions at that time. So I feel like right now it's very easy for us to sit in this AC room and say that this, like how we see cricket and saying, "Hey, Sachin, yaar, cover drive leta na." But when you are there, then it becomes tough. You know, when you have something which you're not prepared for. As Sir said, it was so unexpected
what happened with the world globally. So I think it was very tough position to be in. आपका क्या कहना है आशुतोष जी? मेरा बिल्कुल यही मानना है। और जब कोई चीज़ अप्रत्याशित होती है तो अप्रत्याशित चीज़ के लिए आप उसमें जब इतनी बड़ी वैश्विक विभीषिका है जो वैश्विक स्तर पर ही जिस तरीके से हमारी जितनी जो क्षमता थी, क्योंकि सब संभालना चाहते थे, सब बचाना चाहते थे, तो आपने अपनी क्षमता भर जितना इस्तेमाल हो सकता था अपनी क्षमता को इस कैलेमिटी से बचने के लिए, वो मुझे लगता है कि तमाम चीज़ें की गई हैं। और बहुत सारी कई चीज़ें, नई चीज़ें निकल के आई हैं। अगर आप देखें तो इसमें जो जिन हेल्पिंग हैंड्स की बात की कि समाज अकेला हम रक्षा के लिए या व्यवस्था के लिए हम सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के बारे में विचार करने लगते हैं और समाज उनके ऊपर अपनी तमाम चीज़ें डाल के निश्चिंत हो जाता है, लेकिन उस व्यवस्था का हिस्सा समाज भी बना। तो ये जो मानना है तो सब ने अपनी अपनी क्षमता भर, उस समय की क्षमता भर जितने प्रयास हो सकते थे पूरे विश्व में वो किए गए। और शायद उन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि अब जिनके नुकसान हुए हैं, जिनके परिजन गए हैं, उनको तो जीवन में कभी लौटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये है कि शायद उन्हीं सद प्रयासों का परिणाम है कि एक तरफ कोरोना चल रहा था तो दूसरी तरफ हो सकता है कि भोजन नहीं मिलता, उससे भी जा सकते थे, पानी नहीं मिलता, उससे भी जा सकते थे। तो अगर आप ये देखें तो इस पूरी भीषण बीमारी में भी हमारा अन्नदाता, पूरी दुनिया का किसान, वो बिल्कुल ज़मीन, क्योंकि वो तो मौसम से ही उसको तो प्रकृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। हमारे और आपके पास तो स्वतंत्रता थी कि चलो हम ये वाला काम जो है हम ऑनलाइन कर सकते हैं, हम बैठ सकते हैं, हम घर पे बैठ सकते हैं, नहीं ये फाइल हम कल कर देंगे। लेकिन जिसका संबंध अन्न से है और अन्न का संबंध हम और आप से है, वो ऑनलाइन आप खेती नहीं कर सकते हैं। आपको तो खेत के ऊपर खड़े होना पड़ेगा। फसल में जब पानी चाहिए तब पानी डालना पड़ेगा। फसल को जब कटना चाहिए तभी फसल कटेगी, और फसल को जब तक बाजार तक। तो हम इतने बड़े दुर्भिक्ष से भी अगर बचे हैं, क्योंकि ये तो एक बीमारी थी, लेकिन बाकी और तमाम इस घटना, इस दुर्घटना या इस आपद स्थिति के बाद और जो तमाम चीज़ें घटित हो सकती थी वो नहीं हुई। तो अगर ये देखा जाए तो मुझे लगता है कि सबने अपनी अपनी क्षमता भर जो प्रयास होने चाहिए थे, और सबको, जिसको ये कहा जाए कि एक प्लेटफॉर्म पे, अन्यथा आप वहाँ पे बैठी हैं, गाड़ी चलाते समय ड्राइवर और गाड़ी मालिक बराबर के प्लेटफॉर्म पर होते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने के बाद क्या वो एक प्लेटफॉर्म पर होते हैं? लेकिन कुछ आपदाएं ऐसी होती हैं कि जिन्होंने वापस, आपदा जो होती है वो मजदूर और मालिक में अंतर नहीं देखती। भीड़ कहीं ना कहीं हमारी फिल्म जो है वो वही कहने की बात है कि हमेशा अभिशाप तो होते ही हैं, लेकिन अगर मनुष्य हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से साहस, पावक में कनक सदृश तप कर वीरत्व लिए कुछ और प्रकार, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। तो ये वो वाली दास्तान है जी। Also what we are seeing in the film. Having said all this, I think the best thing that we can do with what happened was not brush it under the carpet and revisit it, look at it, talk about it. It's very important to have inconvenient conversations so that it doesn't happen to you again. So I think the mistakes that we may have made as a society or the governance was probably inevitable. But we learn from that, and God forbid something as terrible happens to us as a society or as a country or as a world, we should be better prepared. We should talk about it. We should have that inconvenient conversation. And that's the reason, that's the genesis of this film. Absolutely. Raj, for you, what has been your most challenging role so far in your career? My most challenging role, oh. Yeah.
There have been a couple of them. Like I would say, physically, I would say Trapped or playing Netaji on screen was physically very demanding and tough. But mentally, I would say Omerta was very, very tough. Couple of them, I think. Playing Surya Kumar Singh was not easy because there's a very definite arc of this character in the film, which you would see on when it releases on 24th March. So I think every character comes with its own challenges. You can't really say that this is something which just came so naturally to me. And I honestly also, as an actor, I don't like things which just come so easy. Yeah. And if there is one South actor and director that you would want to work with as your wish list? So many. See, I don't want to like upset anyone. There's so many talented filmmakers we have, and I want to work with all of them. Like I consume a lot of content from all over the world, be it from Malayalam, Tamil, Kannada, Telugu, Bengal, and around the world. And there's such phenomenal makers we have in the country. There's a great talent we have in our country. And I, as a greedy actor, I just want to work with all of them because it's a director's medium. You can do whatever you can, but if the director is not there, the film would never shape up the way you were envisioning it earlier. All right. And what is your most favorite genre and your character that you must have played? See, films like Bheed or Shahid or Newton, they are very close to my heart. I feel like this is my playground. I love it. But in the recent past, I've done a couple of like comedies, Stree, Bareli, Ludo, and I enjoyed those as well. So I think there's no as such a particular genre I would say I really prefer. As an actor, the challenge is to do everything so that nobody can say, this is the only thing you do, and this is something you can't do. So just to push yourself and try and just be as like water, as you were saying earlier in one of the interviews. Just be like water. You have to be just take any form and shape. Okay. To all three of you, I'll give you 2 films. You have to share some anecdotes about it or even enact that scene, best scene from the film. So for Raj, Kai Poche and Stree. Kai Poche, of course, it will always be special because it was my film with Sushant. And of course, we all miss him dearly. So that will always be special for that reason as well. And that was my, in a way, first big commercial film also. And it was a successful film, one of the most special film, beautiful film, very well-made film. So yeah, just I think the bonding that we three shared on that film, before we started filming and during the shoot and after that in promotions. So I have such wonderful memories from Kai Poche. And the other one was? Oh, Stree. Stree. Stree is fun. Stree is all fun. I think it was one of the best experiences I had, like because it's such a light-hearted film, so nobody was really mentally so tired every day. So we were just having fun, like me, Amar, Raj, DK, all the actors. Stree was whenever I look back at Stree, there's always a smile on my face because it was such a fruitful experience. Of course, of course. Anubhav sir, for you, Tumbin and Thappad, anecdotes, or if you can just share something which nobody knows. Too much. Tumbin was like a child who was given a lot of toys and resources, and I was trying to put a movie together. And when I didn't even know what a movie meant, and when I didn't know why you made movies, it was just to see your name as directed by Anubhav Sinha, probably. I love that film. I love it too. It did a lot of good to me. So Tumbin, as right from the casting of the actors to the music to the shooting, we went to Canada without knowing what cold meant. So for us, cold was from Allahabad or Aligarh. That was Banaras or Aligarh. That's all I knew. I didn't know minus 35. I didn't know I could not carry canvas keds there. I should have carried much warmer shoes, and the whole crew did not have them. And we didn't know we'll start having sunsets at 3 p.m. So we were all in a storm and wanting to make a film, and the actor come here and go there. And so it's great memories. I mean, just because it also turned out well. And Thappad is the film that's closest to my heart because it was about nothing. It was about something that's considered nothing.
कि क्या हुआ, एक थप्पड़ ही तो मार दिया, तो क्या Exactly. घर तोड़ दोगी अब? क्या बात। तो ज़्यादातर दोस्तों को भी लगता था कि इस पे फीचर फिल्म कैसे बनेगी, तो शॉर्ट फिल्म है। पर आई एम हैप्पी कि उसकी फिल्म बनाई मैंने। आई एम वेरी प्राउड दैट आई मेड दैट फिल्म। आई एम वेरी प्राउड दैट अ मैन मेड दैट फिल्म। Yeah. And and you know, every character, every woman in the film is either one of my cousins or my neighbor or a friend or somebody, and they're all real life people. And the number of phone calls I have received from men crying bitterly is outstanding, because when I was making the film, I sort of believed that men will not watch the film. But I have received calls from men. You cannot imagine how many men cried over the phone. That thank you for making this film. They were either crying for their mothers and sisters, or they were crying for their own wives. I have had friends come up to me and say, it changed my relationship with my wife. Wow. So that remains very, and I also have, which may sound funny, but I've received calls from women, I'm talking about strangers, saying that I walked out of my relationship because of this film. So I don't know if that's an achievement. Ashutosh ji, for you, Sangharsh ki koi iconic scene, of course that Indian Red Cry was fabulous. So अगर आपकी कोई memory उसकी best हो जो आप share करना चाहते हो? मैं बहुत ईमानदारी से बात करूं आपसे, किसी भी एक्टर के लिए तब ये ज़्यादा सुखद होता है जब उसके द्वारा एक्ट की गई चीज़ दर्शकों को याद रहे। जी। तो मैं करता हूँ और भूल जाता हूँ। 24 के बाद मैं भीड़ भी भूल जाऊँगा। तो मेरी याद सिर्फ यही है। 26 तक याद रख ले। 26 तक रख ले। तो किरदार जब तक एक्टर के होते हैं, जब तक वो उसके पास हैं, लेकिन जैसे ही वो दर्शकों के पास जाते हैं, फिर वो एक्टर के नहीं रह जाते हैं, वो उनके हो जाते हैं। तो अगर वो उनको लाड़ दुलार देते हैं, याद रखते हैं, उसकी सराहते हैं, तो ये उनका सुख है। हमारा सिर्फ ये आनंद है कि हमारे मनोभूमि से वो निकले और आप तक पहुँचे। चलिए, आपको लेकिन हम जाने नहीं दे सकते जब तक आप हमें कोई शायरी ना सुना दे। अभी सुना तो दी बीच में। आदमी के हैं 4 लोग। कौन सी वाली आदमी? वही सुनाई थी 4 लोग। अच्छा, क्या कि नहीं, आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है। ये भीड़ की बात करके मुझे याद आ रही कि आदमी ने वक्त को ललकारा है, आदमी ने मौत को भी मारा है, और आदमी ने जीते हैं तीनों लोग, पर आदमी ही आदमी से हारा है। Thank you so much. On that note, all the best for your film. Thank you so much.